So activation function. Activation function means before producing an output from a perceptron, it is important to decide whether to activate a neuron or not. मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि न्यूरॉन को एक्टिवेट किया जाए या नहीं, राइट? So the activation function helps achieve this. Now, the sum of the products of inputs and weights is passed to an activation function. X1, X2 up to Xn, the W1, X1, W2, X2, Wn, Xn, summation of these, and then activation function produces some output. So it narrows the values between 0 and 1 or -1 and +1 based on the type of the activation function we use, right? Now, understanding the activation functions, output is equal to weight into input plus bias ranging from -infinity to +infinity. Bound the output to get the desired prediction or generalized results. Now, after activation function is added, y is equal to activation function of this weight, summation of weight into input plus bias. Okay, now why we need activation function? Activation functions are mathematical equations that determine the output of a neural network model. Right. It plays a crucial role in neural networks' ability to converge and affect the convergence speed. तो न्यूरल नेटवर्क का जो कन्वर्जेंस होने का एबिलिटी है, ठीक है, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं. The activation function is needed to introduce non-linearity and enable the model to learn complex relationships and make more expressive predictions. Main function इनका ये है कि नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करना और मॉडल को एनेबल करना कि वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को लर्न करे और मेक मोर एक्सप्रेसिव प्रेडिक्शंस. ठीक है, this is input, activation function is output, and this is happening here in neuron. Sorry, activation functions limit the output by preventing the large positive or negative values in neural networks. तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज को प्रिवेंट करते हैं. There are different types of activation function. Activation function transforms inputs into output using a threshold value. And accordingly, we have different types of it, like step function, sigmoid function, ReLU, softmax function. Now first consider the step function. Consider a perceptron B. This is W1, X1, W2, X2, and this is the bias W0. Okay, and this is the Y output. Now Y is equal to 1 when the sum of the weighted inputs, that is W1, X1, W2, X2 plus BW0 is greater than 0, right? Or else 0. अगर ये sum का जो value greater than 0 होगा तो आउटपुट का वैल्यू 1 हो रहा है, और उससे अगर 0 से कम होगा तो आउटपुट का वैल्यू 0 हो रहा है. तो ये स्टेप फंक्शन है, राइट? A perceptron gets activated whenever the sum of weighted input is non-zero and positive. So non-zero होने से ही ये एक्टिव हो रहा है, राइट? तो आप देख सकते हो कि जब भी 0 से कम हो रहा है तो वो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है ये, राइट? सॉरी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 0 हो रहा है, और 0 से ज़्यादा होने से तो वो वैल्यू 1 हो रहा है. This is because perceptron uses an activation function called step function. Then step function समझ में आ गया. जब ये सम अगर आपका 0 से ज़्यादा होगा तो
आउटपुट का वैल्यू कर दिया जाएगा 1। अगर 0 से कम होगा तो आउटपुट का वैल्यू कर दिया जाएगा 0। वो था स्टेप फंक्शन। अब आते हैं हम सिग्मॉइड फंक्शन में। Sigmoid function produces an output in the range of 0 to 1, making it useful for binary classification tasks. Right? तो sigmoid function क्या करते हैं? आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं 0 to 1 रेंज के भीतर। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ठीक होता है। Sigmoid function, I hope you guys know, 1 plus e to the power minus z, that is the formula for it. इसका वैल्यू डायरेक्ट स्टेप नहीं हो रहा है, ये रेंज ऐसे जा रहे हैं, राइट? 0 to 1। देन एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास रेक्टिफाइड linear unit, that is ReLU. It is the most widely used activation function. We define as fx is equal to maximum of 0 comma x. So if the value of the input to a neuron is 0 or less, ReLU assigns 0 as the output value. अगर वैल्यू 0 या तो 0 से कम होगा तो 0 असाइन कर दिया जाएगा। If not, the output value is equal to the input। तो जितने भी 0 से कम हो रहा है उसको 0 असाइन कर दिया, और अगर नहीं हो रहा है तो इनपुट के बराबर हमने रखा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो वो क्या हो रहा है, जो भी है वो वैल्यू के बराबर रखा है हमने, y इज इक्वल टू x। क्लियर? ओके। ReLU versus sigmoid function. ReLU has an upper hand over the sigmoid function. Sigmoid activation function, when used in deep learning, it suffers from a very vanishing gradient problem. ReLU can avoid the vanishing gradient problem to a greater extent. ठीक है, ReLU में आपने देखा ना, यहाँ पे मैक्स 0 या तो उस x के बराबर, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो। ठीक है, बट सिग्मॉइड में पूरा रेंज जो ले रहे हैं हम 0 to 1 ले रहे हैं। Sigmoid function is mathematically complex, while ReLU is mathematically simpler. Sigmoid 1 plus e to the power minus z, but ReLU में क्या था आपका maximum of 0 comma x. Then another one is we have softmax function. Softmax function, a variant of the sigmoid function, is particularly useful for handling multi-class classification problems. तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेंशन बढ़िया है, इट इज गुड। Software function is used to handle multiple classes. It is commonly found in the output layer of the image classification problems. It normalizes outputs for each class to fall between 0 and 1. It achieves this by dividing each output by sum of all outputs. ठीक है, अभी एक हम एग्जाम्पल देखते हैं न्यूरल नेटवर्क का। उसके साथ एक क्या बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अभी हम निकल देखेंगे। फर्स्ट सिंपल एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस प्रोग्राम विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ ए न्यूरॉन computed we weighted sum and applies the ReLU activation function, right? तो ये प्रोग्राम हम देखेंगे क्लास कोड। क्या कर रहे हैं हम, इनपुट नाम भी एस एन भी, इनपुट फीचर्स विदाउट A2T with 0.5 0.8 बायस लिया हमने 1, so W x प्लस b। ReLU एक्टिवेशन फंक्शन तो हमें पता है मैक्सिमम ऑफ 0 और z। अगर 0 से कम हो रहा है तब भी 0 होगा, और उससे ज़्यादा हो रहा है तो वही वैल्यू होगा, दैट इज x, राइट? तो लेट्स सी वेटेड सम। सो वेटेड सम हमें मिला 4.4, obviously 2 into 0.5 plus 3 into 0.8 plus 1, okay?
So that will be like 1 and Tn, so 24. So 24 plus 1, that is 4.4. As it is 4.4, so it is greater than 0. So ReLU will give you the same output, 4.4. Okay. Next, let's try this code. Here, what we are doing, we are creating an array, hidden layers 0.5, 0.2, 0.8, 0.4, hidden layer bias 1, comma 1, and then np dot maximum of 0, comma np dot xw1 plus v1, जो नॉर्मली हम कर रहे हैं हिडन लेयर के लिए, ठीक है. हिडन लेयर आउटपुट, so hidden layer output will be this one only. तो ये हमने हिडन लेयर बनाया यूजिंग बी. समझ में आ गया था ना कैसे बनाया. एक एरे लिया, उसके बाद वेट, उसके बाद डिफाइन किया हमने एरे 1, 1, then maximum, मतलब just like ReLU function, we are using this value for hidden function. Now let's come to the TensorFlow neural network. This is our program. Set the screen again. Okay. So ये पूरा TensorFlow यूज करके हम बना रहे हैं neural network. Let me take this program. Just 1 minute. Right, this one. So import TensorFlow as TF from TensorFlow.keras, import layers and model to create a sequential neural network. Models.sequential, input layer plus first hidden layer, 64 neurons with ReLU activation function. Input set 10 means each input sample has 10 features. Okay, हमने layers define किया, layers tan 64, activation function ReLU, input shape 10 features, 64. Okay, तो यहाँ पे 64 न्यूरॉन्स रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया हमने ReLU, और 10 फीचर्स रहेगा. 10 फीचर्स को हमने सिलेक्ट किया है. देन सेकेंड हिडन लेयर हमने बनाया, layers dot dance 32 एक्टिवेशन ReLU. सो यहाँ पे 32 न्यूरॉन्स लिया है, ठीक है. देन आउटपुट लेयर 1 ही रहेगा, 1 न्यूरॉन विथ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन. सो layers dot dance 1 comma activation is equal to sigmoid. Now compile the model.compile. Optimizer use किया है हमने ADAM, loss, binary, cross entropy, matrix accuracy. Optimization algorithm हमने use किया ADAM, right? Binary cross entropy, matrix accuracy. Then model.jamari. So let's run this program. Program run successfully. So आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट दिखाएगा. ये सीक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क है. Dance 3, Dance 4, Dance 5. फर्स्ट जो आपका हिडन लेयर था उसमें 64 न्यूरॉन्स लिया था. देन नेक्स्ट में 32, पे अराउंड 2080, एंड लास्ट में आपका आउटपुट लेयर 33. total params 2817, trainable params 2817, non-trainable 0. You got it? So this is a sequential program. इसमें हमने input layer में 10 features use किया, hidden layer में 64 neurons and ReLU activation, hidden layer 2 में 32 neurons,
ReLU, and output layer में one neuron and SIGBERT activation. So this program creates, configures, and displays a feed-forward neural network. Since no training data is provided, the model is not trained. It only defines the network architecture and prints its summary. ठीक है, ये आर्किटेक्चर को दिखा रहा है क्योंकि हमने ट्रेन तो यूज नहीं किया है, ट्रेन के लिए कोई डाटा यूज नहीं किया है, तो सिर्फ ये सिंगल आपको आर्किटेक्चर बता रहे हैं. राइट, दैट्स ऑल. थैंक यू.